there is a loneliness that is there in every PhD student if they are not married, because they don't have a family to go back. And 5 years without a family does impact your mental health. And it's very, 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 that is the challenging part, not the research part, not the education part. It's just how are you managing that loneliness. PhD does not mean that you stop your life and are only doing your research. Right. PhD means that along with your research, you are living your life, you are spending time with your family, if possible, if you are married. And like Sai said that spend time with your friends, have friends, enjoy, have some leisure time also, which is very important. I want to know, I'm sure the audience would want to know कि ये 5 साल जो हमने बोला है 5 साल ये अंदर से कैसे दिखते हैं. Give us a view of these 5 years, how it is broken और इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कराया जाता है. Hello everyone, if you ever think about pursuing an academic career or doing a PhD but are not sure where to begin, शुरू कहाँ से करेंगे, PhD admission कैसे लेते हैं, curriculum क्या होता है, then this video is for you. In this video, we are going to try to discuss all the doubts related to admission in PhD, curriculum, life after PhD and during PhD. And we have two very special guests with us today. Very welcome Harman and Sai. You, both of you are our almost final year PhD students. Thank you so much for finding time for this video today. Hello. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so please tell us something about yourself and why did you choose a PhD program at the first place? Sir, in my case, after my MBA, I did my MBA in 2009 Okay, from IIM Business School, Navi Mumbai. okay. And after that, I have worked for 9 years in the corporate world. 9 years in Yes, corporate. yes. IT, is it? In digital marketing specifically. Digital Yes. marketing. Okay. And at some point of time, I felt that I should make a change from my corporate career Okay. to an academic career, because I always had some interest in academics. I had this idea that someday I want to be to go into academics. So, and this world attracted me. So finally, I decided in the year 2018 that I would fully enter into PhD program. Bye bye corporate. And I think वो एक कॉलिंग आती है अंदर से, वो क्यों आती है हमें नहीं पता होता ना, पर जिसको आती है वो आती है कि अब कुछ नया करना है एकेडमिक्स. Right, sir. Fair enough. साई आप बताइए. Sir, I come from a family of academicians, so it was very natural for me to only choose being a professor as a profession. And Okay. my mom was doing PhD in mathematics when she got married, and my father is a professor in organizational behavior in Visakhapatnam. So it was very much natural for me कि मतलब मुझे पता था कि मुझे PhD करना है and more like professor बनना है. So I was an engineer before I joined PhD program. So 2013-17 I was a computer science engineer, and then in 17 I applied for various IIMs for a position of a PhD and essay. That was how, because my father was a professor in OB, it came naturally कि मुझे psychology पढ़ना है उसके बाद. So I was looking parallelly to do an MBA. At the same time I was applying for PhD positions as well. So it looks like you decided in class 10th कि मैं तो मैडम बनूंगी. Is it? My mom wanted me to do a PhD in core natural sciences. My father wanted to do like you would fit better for psychology or something like that. So And yes. why did you choose one over other? I know, sir, that my interest was basically in understanding psychology, more specifically transpersonal psychology, something related to mind. And I really thought I would do it better because I have my brother doing better at natural sciences. So it was natural for me to go into a PhD in psychology or something related stuff. So You go to science, I go to social science. Is it? Perfectly. So balanced family. Perfect. Okay, that's very interesting to know. So Sai, did you have any work ex before you joined? No, sir. I was straight out of BTech. So 9 years work ex vis-a-vis zero work ex and zero masters. Okay, fair. No masters as well. No masters. So you did your engineering and came here. Directly. Well, it's so important for me to stop this interview right here and tell this to you that you can do a PhD right after engineering. You don't need a master's degree. So she does not have a work ex, you have lots of it. Do you feel all that experience helped you do things better or understand the PhD curriculum better?
Sir, in a way, I would say yes, because once you have post your graduation or post graduation, you start your career in corporate world. Right. You ingrain some qualities, you ingrain some perspective of the real practical world in terms of how do you interact with people, how do you get things done in the real world. Okay, you solve real world problems, and once you get that experience and enter into academia, into full-time PhD program, it helps you because then you can think about real life problems that you can solve through your thesis or through your research papers. And it helps actually because once you and you also develop writing skills in the corporate world. You have to write emails, memos, and so on. So you develop some writing skills also, and you develop thinking skills also, solving problems, analysis. Of course, the level of analysis and writing is much more advanced in PhD. That is no way comparable to what we do in corporate world. That's right. But definitely what we are bringing from there, that experience or perspective, it helps you to develop that and take it forward over there. Makes sense. That is my idea, feeling or idea about it. And possibly you also develop a lot of patience and maturity in corporate, which possibly translates into this long journey at some point. So patience, I would say may not be that much. Okay, in corporates. Probably here in PhD you develop much more patience compared to corporate. Makes sense. I think I agree with your Yes. point now. Sai, you do not have any work experience. Did that hinder your progress in any ways? Did that stop you in any ways? No, sir. Actually, right. I think I came in with a lot more enthusiasm to do, right? Because I was constantly like, if you have an educational background, very fresh educational background, so it becomes easier to continue studies in that flow. So, right after finishing my BTech and giving my exams and coming to a PhD, it was not difficult for me to sit back with the big books for hours and hours or do research. So, I had that enthusiasm as a motivation. So, I think lack of experience might be a small hindrance in not getting an overall perspective, as Harmanji mentioned. But I really think that there is an enthusiasm that you bring into PhD, and you have a lot of optimism that you bring into us if you come in fresh without an experience. So yeah. This is so fascinating, really. You have work-ex and you think it helped you. You do not have work-ex and you think it did not cause any hindrance. Clear moral for all of you. You may have zero work-ex or you may have 20 years work-ex. There is never a wrong time to do a PhD. You can just hear your calling and begin it. Am I right? Right, sir. I agree. Because even adding to Bhargavi's point that on LinkedIn, in fact, I'm connected to many people across the world who are PhDs or who are professors, and I felt that it is definitely not a hindrance at all being a fresher, and your interest into doing PhD, in your interest about getting into academia, that itself is enough. Because you're already coming from a graduation or post graduation, you are already having that basic skills to enroll into PhDs. वो आवाज दिल से आनी चाहिए नहीं कि कुछ प्रोफेसर बनना है, कुछ रिसर्च करना है. Isn't it? Right. तो वो आवाज आप दोनों के दिल से आई थी जब आपने बिल्कुल सर. Fair enough. Very, very interesting. Since we are discussing these things, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है. Harman, I am aware that you are married, you have kids. How does a married person cope up with the rigor of a PhD program? Yes, sir. So, sir, there are both benefits, pros as well as cons of being married and doing PhD. But largely, I would say this journey has been very positive for me. Why? Because PhD is, as we know, in IIMs, it is a very rigorous program. Specifically, we are talking about PhD in IIMs. It is a very rigorous program. You have to work very hard, long hours. You have to learn different methods, tools, and techniques. You have to understand scientific way of writing, which in itself is a huge, big skill, and takes a lot of time to develop. Even now, I'm finished with my PhD and still learning it. So, at the same point of time, I feel that your family helps you actually, because when you are enrolling into such a rigorous program and you have to work very hard, you are stressed out sometimes
sometimes the things do not get worked out, and sometimes Go to your kids and play with them, isn't yes. it? So when you get to your home after the stressful day of working, it helps to play with your kids or to spend your time talking with your wife. Okay, so that helps definitely. It's a stress buster. Family is a stress buster, to be. So true, and I completely agree with you. My experiences were completely the same when I was doing a PhD. I also had kids, and when you are angry with your supervisor or with anyone else, go back home and play with kids, and you can start from scratch. Right. So true. Okay, Harman, that's interesting. तो मैरिड वालों को तो कुछ फायदे हैं. साई, कुछ आप बताएंगे कि सिंगल लोग कैसे मैनेज करते हैं? Sir, It's all pros, right? No cons. So actually, the cons and the costs are higher because the most difficult part of PhD is not the studying part or not doing the research part. The part comes from how do you manage your free time. More specifically, there is a loneliness that is there in every PhD student if they are not married because they don't have a family to go back. And 5 years without a family does impact your mental health. And this very, that is the challenging part, not the research part, not the education part. It's just how are you managing that loneliness. So it's better to have friends and more specifically having a hobby. Surviving PhD can happen in a sane way only if one has a hobby to do it. Any kind of hobby. Have a hobby because when you fall back or when you face failures of or rejections of publications and all, it's a hobby that can revive your energy back. You have a life outside PhD, your hobbies ensure that you have a life outside PhD. For me, that was my way of survival throughout my PhD. So if somebody who is not married, the main challenge in the PhD is regarding what friends do you have, do they help you out, and have very few friends but quality friends. And second is having a hobby, personal hobby, because that is how you can deal with your solitude or manage your loneliness that you feel. Well, I am aware that you are doing very, very good work with an NGO. The whole institute knows, and we congratulate you for that. Lekin, because you have said this, it instantly reminds me of my PhD advisor. And when I was like, कि सर मैं रात को इसको कर देता हूँ, तो he said, no, सफल, रात को नहीं करना है, कल करना. It is a marathon. नॉट 100-मीटर रेस जो आप 4 दिन में खत्म कर दोगे. भैया 4 से 5 साल की डिग्री है. तो काम करेंगे, शाम को स्पोर्ट्स करेंगे, कोई हॉबी करेंगे और अगले दिन फिर से काम करेंगे. आई फुली एग्री सर. जो आपने पूछा था, मैरिड पर्सपेक्टिव पूछा था कि कैसी होती है लाइफ पीएचडी में, तो आई फुली एग्री कि आपको सारे काम करते रहने चाहिए अपनी जिंदगी के. पीएचडी डज नॉट मीन दैट यू स्टॉप योर लाइफ and are only doing your research. Right. PhD means that along with your research, you are living your life, you are spending time with your family, if possible, if you are married. And like Sai said that spend time with your friends, have friends, enjoy, have some leisure time also, which is very important. और दूसरा सर जो आपने जैसे बताया कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स करो, एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ करो और नींद पूरी लो. और नींद पूरी करनी भी मुझे लगता है मेरे शुरू में मैंने जैसे देखा था, मेरा पहले 1-2 साल में मैंने ज़्यादा स्ट्रेस लिया था, नींद कम लेता था, तो उसका मेरे हेल्थ पे भी असर पड़ा था. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक कंप्लीट स्लीप एवरी नाइट, एंड इट हैज़ वेरी हेल्प्ड मी अ लॉट. और दूसरी चीज़ जो आपने बोली है और मैं भी एग्री करता हूँ कि रादर देन 100-मीटर रेस, इट्स अ मैराथन. सो वर्क कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस. अपने फिक्स अगर आप 4-5 घंटे भी रोज डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं अपनी रिसर्च के ऊपर, आई थिंक दैट इज इनफ ओवर 4-5 years. So friends, moral of the story and a super important point, PhD is a marathon. You have to dedicate 5 long years of your life to this program. So be very thoughtful before you even think of joining. And if you do, then you have to maintain a balance in your life. It's not just all work and no play. It has to be some work, it has to be some play, and you have to find your balance. तो फिर ये नेक्स्ट फेज कैसा होता है, 3rd to 5th ईयर वाला, जो आई थिंक जो आप बोल रहे थे एक लोनली जर्नी है, जो खुद से आप और आपके सुपरवाइजर, उसमें क्या होता है और कैसे आगे बढ़ते हैं? सर जनरली एज यू सेड, आफ्टर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम द कैंडिडेट इज ऑन his or her own. Okay, but there is a beauty that you are free to choose the topic of your choice.
depending upon the literature you have studied, or academic literature, research papers, or books which you have studied, or real life problems which you want to solve, you can decide the topic of your thesis, that I want to work on this topic. But you are on your own in the alignment with your thesis advisory committee and your thesis guide. You decide and you pitch the topic that I want to work on this area, I'm confident to work on this area. Okay. तो वो तो है, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भाई जो कैंडिडेट है, जो पीएचडी कैंडिडेट है, जो फर्स्ट 2 साल है कोर्स वर्क के हैं, उसको उसी ड्यूरेशन में ही सोचना शुरू कर देना चाहिए, बिगिनिंग में ही. ऑफ कोर्स के पहले 6-7 महीने तो बहुत ही बिजी है, अभी समझ ही रहा है चीज़ों को, लेकिन 6-7 महीने होते होते, साल होते होते उसको थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर देना चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ. लेकिन ये एक बहुत आइटरेटिव प्रोसेस है. द टॉपिक विच वी थिंक इनिशियली, that keeps on refining and changing till you are finally over the next decided. 2 years. Yes, till you are finally decided upon. That's why the candidates should start thinking about the research topic or thesis topics very early in his PhD journey, his or her PhD journey. So essentially, if I understood you properly, पहले 2 साल बहुत सारी पढ़ाई करनी है और समझना है कि करना क्या है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा, उसके बाद अपने टॉपिक को फर्दर स्ट्रेंथन करना है, उसके बाद उस पे काम करना है, डेटा कलेक्ट करना है, फाइंडिंग्स जनरेट करनी है, और फिर अपना थीसिस लिखना है. इज दैट द जर्नी? Yes. It's a very short and sweet journey, isn't it? Yes, sir. Sir, But I feel that the research topic which we choose should be very current and very interesting, and should be related to the real life scenario. And it should be closer to our heart also, so that we feel motivated to keep on working till the end of 4th or 5th year, till we are done with the thesis work. It should be a topic that is close to your heart. Yes, sir. It's Definitely. a question that you really worry Definitely. about. For example, sir, as I said that I have 9 years of work experience, and it was into digital marketing. So I chose a topic into digital marketing, related to digital marketing. So I never felt demotivated. Even now I am extending my topic further. I am trying to publish I've got few publications in research papers, in the journals, and I am developing more papers for future, as my future work. So I feel motivated because that topic is closer to my heart. ओके, दिस इज वेरी एक्साइटिंग. तो अब थोड़ी सी एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं. आई एम श्योर जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो जानना चाहते होंगे कि एडमिशन कैसे होती है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, प्रोफेसर कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या सोचते हैं, और आप उस फेज से अभी निकले हो. अभी मींस जस्ट 4-5 साल पहले. सो इन अ पीएचडी जर्नी दैट्स अ स्मॉल टाइम. तो मुझे कुछ रैपिड फायर में कुछ सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, बोथ ऑफ यू. क्या क्या एरियाज होते हैं मैनेजमेंट में जिसमें इंसान पीएचडी कर सकता है? रिसर्च हम बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स में कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड मार्केटिंग. And I think उसके IT बावजूद भी information systems. information systems, right? And also operations management. Operations These are the management. 8 areas Digital which most sciences, IIMs have. yes. ऑफर. तो ये कैसे चूज करना चाहिए कि कौन सा एरिया मेरे लिए सही है? आपने मुझे समझा दिया कि आपके फादर साइकोलॉजी में थे, आपको उसी में जाना था. आपने शायद डिजिटल मार्केटिंग में करा था. सर मेरी मार्केटिंग की बैकग्राउंड थी, तो इसलिए मार्केटिंग स्ट्रीम मैंने नेचुरली एक मेरे लिए एक चॉइस थी. तो अदर्स, व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर अदर्स? हर एक फॉर अदर्स सर टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरेस्ट एरियाज, कि उनको कौन सा सब्जेक्ट इनमें से अच्छा लगता है. और दूसरा वो अपना देख सकते हैं कि किस में ज्यादा जॉब्स के चांसेस हैं इन द फ्यूचर. जॉब्स के चांसेस तो हरमन सब में है, सब में होते हैं. इट्स अबाउट देयर इंटरेस्ट, आई बिलीव. एंड आल्सो इफ आई वर टू टेक सम क्यूज, जैसे आपने मार्केटिंग करी थी तो आपने मार्केटिंग में किया, आपको साइकोलॉजी से प्यार था, तो मुझे लगता है जहां किसी इंसान का बैकग्राउंड रहा हो वहां पे अगर आगे बढ़े तो मच मोर बिल्कुल सर लाइकलीहुड ऑफ एंजॉयिंग होता है. Right. Isn't it? एग्जाम्पल, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो तो इफ ही डिसाइड्स टू गो फॉर एन ऑपरेशनल PhD in operations management, that could be a right fit according to background. 100% Right agree fit. with you. Right. और अगर कोई आईटी में 3 साल जॉब किया हो तो आईटी एंड सिस्टम्स के अंदर वो बहुत अच्छी रिसर्च बिल्कुल कर सर. सकता वही सर, एट द एंड ऑफ द डे कि आपका इंटरेस्ट क्या है. है. अगर आप मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप ऑपरेशंस ले लीजिए. अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर अच्छा लगता है, मार्केटिंग ले लीजिए.
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अच्छा लगता है वो भी एचआर ले लीजिए, तो डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। और अगर आपको फाइनेंस इंट्रीग करता है या फैसिनेट करता है या मनी मैनेजमेंट या स्टॉक मार्केट, तो फाइनेंस में आइए। राइट, लाइक दैट आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर, हमेशा ही, कि स्मॉल बिजनेसेस कैसे परफॉर्म करते होंगे, उनके क्या चैलेंजेस होते होंगे, छोटे बिजनेसेस इनोवेट कैसे करते होंगे। तो मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी करी, तो आई थिंक दैट्स द रेसिपी ऑफ व्हाट रियली एक्साइट्स यू, and more importantly what is that you can work for the next 30-35 years of your life. डेफिनेटली सर। और सर जैसे लिंक्डइन पे मुझे अक्सर ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आते रहते हैं बहुत सारे पोटेंशियल पीएचडी कैंडिडेट्स के। ओके, क्या पूछते हैं वो हरमन? वो सर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन तो होता है कि मैंने आईआईएम काशीपुर में अप्लाई किया है, क्योंकि मैं आईआईएम काशीपुर का हूँ, तो मैं अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, आई हैव अप्लाइड फॉर पीएचडी एंड आई वांट टू गेट इनटू इट, प्लीज टेल मी हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएचडी। दैट वाज एग्जैक्टली माय नेक्स्ट क्वेश्चन हरमन, तो आप बताइए कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर आई गाइड देम टू रीड द बेसिक्स ऑफ रिसर्च। फॉर एग्जांपल आई रिकमेंड सम ऑफ द बुक्स लाइक बुक बाय एलन ब्राइमैन, okay, Alan Brightman, social research methods, okay, so that is one of the books which I like. okay, there are some free books available for downloading also on internet. I don't remember their names. So there is another book by Dr. Amol Bhattacharya, and that is an excellent book on research available freely for download. And these two books, any of these two books, the candidates can refer to understand the basics of research. Okay, at least they should know that what goes into research, what is PhD all about. Yeah. So they should know the basics. I completely agree. Yes. They should have some understanding of what is to be done. How to frame the research, how to frame the thesis, how to frame the research paper. They should have some basic idea about it. What do you say? What preparation is required? My 2 cents of how to prepare for an interview is, you might have a background in a similar subject or you might not have a background in a similar subject. That should not deter you from not choosing anything, a subject which is very different from your background. For instance, there were PhDs in my batch who were engineers, but they wanted to pursue a PhD right away in economics. So how did they prepare is having an overall view of why do you want it. Interview में ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें कितना आता है, वो ये देखना चाहेंगे तुम कर पाओगे कि नहीं. It's more on the personality. Can you sustain the 5 years rigorous PhD course? So they look for you as in they want to check whether are you patient or not, are you eager to learn or not, and more specifically they would like to understand तुम्हारा overview क्या है research का, what is hypothesis for instance, how do you form a research question, or how do you argue regarding your own idea or thesis. So if you want to, not thesis also, a broad research idea, अगर तुम्हें अपनी तरीके से रिसर्च इंटरव्यू को स्टीयर करना है, इट्स बेटर टू हैव एन एसओपी और रैंडम वेल थॉट रिसर्च क्वेश्चन टू पुट forth on table so that the professors or the panel gets to understand that you're really serious about doing this, something like that. This is my 2 cents. For instance, when I appeared for the interviews, I made sure that I had a rough research question as to what do I want to do research in. It might not like manifest as your final thesis, but rather it will show that you're serious about doing a PhD for 5 years. Right. And if you are thorough about it, you can steer the discussion. Ki, I want to do it like this, why I want to do it, and it will give an overall picture of why and who you are as a person and why can you sustain PhD. So that is it. So essentially you are trying to say that having some interesting research questions that excite you, that intrigue you, will help have a very interesting discussion with the interviewers, isn't yes, it? Sure. Yes. That's not going to be the question ever on which you will do your PhD, क्योंकि अभी तो आप किंडरगार्टन में आ रहे हैं yes. और बाद में आपने निकलना है 12वीं क्लास से, तो क्वेश्चंस तो चेंज होंगे, बट इन द डिस्कशन इफ यू डोंट नो anything exciting about the area which you are applying to, तो मैं क्या पूछूं आपसे और क्या चर्चा करूं और कैसे आपको सेलेक्ट करूं. सो अंडरस्टैंडिंग दोस क्वेश्चंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. और ये सर ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, जो भी ये पोटेंशियल पीएचडी कैंडिडेट्स के आते हैं मैसेजेस कि भाई क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में जी. मेरे ख्याल में वो आप ज्यादा एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं उसमें, अगर आप. आई थिंक यही पूछा जाता है जो आपने बोला है, यू आर ऑल गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, एंड आई थिंक यही जो एग्जैक्टली साई ने बोला है कि आपने जो रीजन चूज किया है, क्योंकि जो आपने अपने 2 लॉन्ग सेंट्स में बताया कि यू नो आप सडनली इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हो, बट
आई वॉन्ट टू नो क्यों जाना चाहते हो भैया? अगले 35 ईयर्स आपको इकोनॉमिक्स पढ़ानी है और रिसर्च करनी है, आपने आज तक नहीं करी है. दैट्स नॉट अ बैरियर, but I need to be convinced that your reasons are genuine. So I would like to know in great details क्यों, why, but tell again why. मेरे ख्याल में ये जो आपने पॉइंट बोला अच्छा है, क्योंकि खाली जो वाई जो है, हर चीज के वाई पता होना चाहिए कि वाई IIM काशीपुर, वाई PhD इन मार्केटिंग, हर चीज का वाई जो है वो अगर क्लियर है. मेरे ख्याल में एक बहुत फेमस स्पीकर भी है साइमन सेनेक नाम का, तो उसके भी यही एक बुक भी है, स्टार्ट विद वाई. तो मेरे ख्याल में दैट इज a very good and before point. others ask you, you should ask yourself, Yes. why do I want to do और this? मेरे ख्याल में अगर इंसान खुद क्लियर है, तो पर्सन इज क्लियर कि व्हाई आई वांट टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, फॉर व्हाट रीजन, तो वो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होगा. That confidence will reflect in the interview also. Agree. Clarity will reflect in the interview. Agree, completely agree. और क्योंकि साई ने कहा था कि आप अपना एरिया चेंज कर सकते हो, तो मैं तो IT में था, I was in information technology, but I was intrigued by small businesses. So I really needed to explain why. तो आपको पता है मैंने क्या किया था? लॉन्ग बैक जब मुझे अपनी PhD का करना था, मैं कुछ स्मॉल बिजनेसेस से मिल के आया, जाकर वॉक इन किया और उनसे मिला कि आपके क्या चैलेंजेस है, आपकी क्या लाइफ है, और वहां से जो मेरे वाई के आंसर्स निकले, आई कुड कन्विंस द पैनलिस्ट्स, यू नो, एंड देयरफॉर I agree with your points. Very interesting. Okay, friends. So now we know what it takes to get admission into the program. ठीक है, आपने मेहनत करी, अपने एरिया की क्लैरिटी ली, आप एडमिट हो गए. Now let's discuss about what post admission, these 4.5 to 5 years that you are here, ये कैसे दिखाई देते हैं? प्लीज पार्टिसिपेंट्स को बताइए कि ये 5 साल कैसे डिवाइडेड होते हैं, कोई स्ट्रक्चर होता है, और किस तरह से आप मूव करते हैं. Sir, usually PhD in IIMs ranges between 4 years to 5 years. पहले 2 साल जनरलिस्टिक स्टडीज होती है, जैसे कि यू अंडरस्टैंड वेरियस डिसिप्लिन्स, नॉट जस्ट योर ओन डिसिप्लिन. सो ऐसे हम लोग लिटरेचर या बहुत एग्जिस्टेंट मैनेजमेंट थियोरी, सारे डिसिप्लिन्स के रिलेटेड पहले 2 साल पढ़ते हैं. और करिकुलम में 2 साल के एंड में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है. सो इफ आई हैव टू समराइज हाउ द फर्स्ट 2 years are different from next 3 years, the first 2 years are more of a generalistic perspective of the literature. The next 3 years are more specialized research perspective. So पहले 2 साल के एंडिंग में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होती है. जो आपने पहले 2 साल में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उस सब पे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाता है, कितना पढ़ा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. तो पूरे 2 साल जो आपने पढ़ा उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा. इफ यू पास देन यू गो फॉरवर्ड, इफ यू फेल बाय बाय. इज दैट राइट? यस. सो या द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन जो होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आगे आपकी जर्नी जाएगी या वहीं खत्म हो जाएगी. बट ज्यादातर लोग पास हो जाते हैं, राइट? सर हो जाते हैं डेफिनेटली. इवन एट IIM काशीपुर मोस्ट ऑफ द पीपल क्लियर इट. द थिंग इज व्हाट वी रिक्वायर एज अ कैंडिडेट इज के वन शुड बी सिंसियर, वन शुड हैव सम इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क. सिंसियर, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, यही तो चाहिए. ये चाहिए सर. अगर ये इंसान के अंदर है, PhD कैंडिडेट के अंदर है, तो दैट पर्सन विल फेस नो डिफिकल्टी इन क्लियरिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम. बहुत ही बेसिक assumption तो हम मान ही सकते हैं कि जो इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के, कॉर्पोरेट छोड़ के, सब छोड़ के 5 साल के लिए आ रहा है, there is a very high chance कि उसके अंदर ये 3 qualities होंगी. I think this is a very good point you said कि once you are dedicating yourself to the system program, you full-fledged full-time PhD के लिए आप आ रहे हैं, you have already made your mind for this program, so you should not face a difficulty. Any problem. Yes, it is rigorous for sure. You need to do a lot of hard work for sure. There is no easy route, but you will do it. ये भी आपने सही बोला. Nobody promises you it's gonna be a very easy journey. It's gonna be too smooth. That's not a promise anyone will do. You should understand कि ये एक लॉन्ग प्रोग्राम है, इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, ये एक मैराथन. पेशेंस भी चाहिए, मैराथन में पेशेंस भी चाहिए, स्टैमिना भी चाहिए. बिल्कुल, स्टैमिना भी चाहिए. एंड इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है. एंड सर ऑल दीज आर positive things because you are sharpening your mind, you are sharpening yourself. Yes. With all this exercise, you are going to emerge as one
good intellectual person Definitely, after sir. all this journey. Definitely, sir. I agree. अच्छा ठीक है, साई तुम बताइए, ये 2 साल कॉम्प्री पास हो गया तो फिर 3 साल कैसे दिखेंगे? The next 3 years कॉम्प्री पास होने के बाद it is a lone wolf journey, I would say. Lone wolf is safe. From there, the journey with you, your subject, and your thesis advisory committee, TAC, Yes. your thesis guide. ये relationship perfectly prioritize हो जाती है आपकी. यही आपकी फैमिली बन जाती है अगले 3 साल Eventually. Also, you should आपकी priorities अलग ही बदल जाते हैं when your research starts in. You are more into, and वहाँ पे guidance सिर्फ अगर आपको मिल सकता है, खुद से मिल सकता है और या फिर आपके गाइड से मिल सकता है. ये दोनों ही रिलेशनल एक्सचेंजिंग सोर्सेज हैं. बाकी सब साइड जैसे दोस्ती वगैरह, इट एवरीथिंग, everybody begins on their own personal journey into their research. These 3 years define you as a person. These three years will define you as a researcher. These 3 years will also define you and change your personality for the upcoming challenges. मेरी इसमें definition of sir, 3 साल yeah. holistic हो जाती है कि मतलब you will be refined, you'll be continuously refining yourself as a person, researcher, and eventually who you will come out as a professor as well also. Exactly. Right. So These are the foundational years. Yes. हाँ सर, इसमें सर भार्गवी ने काफी अच्छा पॉइंट बताया जो थीसिस गाइड के रिगार्डिंग के, जो आपकी एडवाइजरी कमेटी है थीसिस की और गाइड के साथ जो आपकी एक फैमिली बन जाती है, एकेडमिक या प्रोफेशनल आप कह सकते हैं फैमिली बन गई. इसके अलावा मुझे लगता है कि जो आप नेटवर्क करते हैं के थ्रू लाइक वेबसाइट्स लाइक रिसर्च गेट, थ्रू लिंक्डइन, so I would advise potential PhD candidates that once they are on board, they should connect with different PhDs across the world, different professors across the world on LinkedIn and on ResearchGate, and they should go to conferences wherever possible, national as well as international, and IIM system supports it. We have very good system over here of contingency grants and conference grants which supports these activities and travel and attending of conferences. So this networking which people do or PhD candidates do is very helpful in terms of solving research problems, day-to-day research problems, and getting newer ideas also. You get to validate your ideas from others. You get to know कि बाहर क्या चल रहा है, कि क्या चर्चा चल रही है आजकल. And sir, you get very good inputs. For example, I attended one workshop in IIM Udaipur in 2019 in the second year of my PhD. Okay. And at that point of time, I was developing a research paper, a systematic literature review, which got published later on. And I got very good inputs from the professor over there, which I incorporated in my paper, and it helped me to push it further for publication. So while it is a lonely journey, yes, but there's a lot you can do to kind of make it easier, and by having the right inputs, because it is research is socially created. It's not done alone. So talking to people, taking their inputs, that's also a part of, getting engagement and enjoying the process. Definitely, sir. Makes sense. There is a quote in Alchemist that says that if you want something and the universe will entirely conspire to get that done to you. So if you are a serious researcher, आपके पास खुद ही आपके जो collaborate करने के लिए opportunity से लेके knowledge exchange ideas सारे, if you are serious, you will be on the right path. You will get things done. You will find ways out. The only suggestion is keep your priorities straight. मतलब क्या क्या करना है वो, अगर if you're a serious researcher, all the professors, everybody is just there to help you out. You just have to reach out to people and let them know how they can help you. Right? It takes nothing to ask. There is a quotation from someone, I don't know by whom, and it works in both corporate as well as in academic life, that it takes nothing to ask for something. You just have to write a message to anyone in the world, and you get a reply back. And I personally experienced it that when I was doing my research in the last 4 or 5 years, and where I felt stuck that I am reading some researcher's paper from someone authored by an American author or Australian professor, I would just email them and I would get a reply back. Absolutely. Perfect. Your words completely remind me of my professor at IIM Ahmedabad, Professor Dikshit, who used to say that to be a good researcher, you need to ask shamelessly. You need to ask shamelessly. Go and ask. I need this help. But at the same time, you need to give generously. अगर कोई आपके पास आए
तो भैया उसे भी दीजिए, सिर्फ आस्क मत कीजिए. एंड इफ यू डू दैट होल प्रोसेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड इट इज, नो? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. सही बात है. तो आप बताइए, नाउ दैट यू आर एट द फैग एंड ऑफ दिस जर्नी, आपके ये 5 साल कैसे रहे हैं IIM काशीपुर के अंदर? क्या अच्छी चीजें हुई, क्या बुरी चीजें हुई, पूरा एक रिकॉल करके हमें बताइए. सर मेरे लिए तो ओवरऑल ये जर्नी बहुत अच्छी रही. मतलब पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी मेरी फैमिली भी ग्रो हुई है. ओके, वाओ. आई एम ब्लेस्ड विद अनदर सन. ओके, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. एंड प्रोफेशनल फ्रंट पे मुझे मेरी पब्लिकेशंस भी आई हैं, यस. तो वो भी, और मेरी थीसिस भी फाइनल डिफेंस के करीब है. ओके, तो कांग्रेचुलेशंस अगेन. आई एम वेरी थैंकफुल. और दूसरे यहाँ का जो सिस्टम है कि बहुत एक फ्रीडम देता है आपको एज अ PhD भी, एज अ PhD कैंडिडेट भी आपको बहुत फ्रीडम देता है कि आप अपने हिसाब से टॉपिक चूज करिए, अपने टाइमिंग्स के हिसाब से काम करिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम करिए. और डेडिकेटेड स्पेसेस अवेलेबल हैं, और आप लाइब्रेरी रिसोर्सेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो मेरे लिए ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव रहा एक्सपीरियंस थ्रू आउट यहाँ का. गुड टू हियर दैट. आप बताइए. सर मेरी जर्नी यहाँ पे, दिस वाज माय फर्स्ट हॉस्टल एक्सपीरियंस आल्सो इन द कॉलेज. सर आई हैड ग्रेट टाइम. मुझे 5 साल अभी खत्म होने में मेरा मन नहीं लगता कि खत्म हो रहे हैं. तो 5 साल और लगाना चाह रहे हैं? नहीं सर. नहीं सर, ऐसा नहीं. बट आई एंजॉयड थरोली. मोर स्पेसिफिकली मुझे जो सपोर्ट फैकल्टी से मिला, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. मुझे व्हेनेवर आई हैड डाउट्स अबाउट माई सेल्फ, माई प्रोफेसर्स वर लाइक द पिलर्स. मतलब ये तो ऑफ एंड ऑन आई वुड रियली से दैट द काइंड ऑफ बिलीफ दे इंस्टिल्ड इन मी, वो कभी कभी लगता है कि जैसे हनुमान की मतलब बल की याद दिलाना जैसा. आई फेल्ट वेरी मच empowered. And even now, if I have a doubt regarding my thesis or any research question or something like that, I can just pick up a call and just call my professors and ask and get clarity. This kind of exchange, which is a very healthy knowledge exchange between the guide and the student, is a very 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 go to. And there is a sense of perceived support जो मुझे मिलता है. इसी के लिए मैं बहुत grateful हूँ कि मतलब throughout my Well, journey. for that I would say not just even now, even after 25 years, I think this relationship of a supervisor and a student remains intact. आज भी मुझे कोई भी डाउट होता है तो मैं पीछे अहमदाबाद में फोन Of करता course. हूँ और मेरा फोन क्विकली उठाया जाता है, टचवुड, और सारे आंसर्स दिए जाते हैं. सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप. बिल्कुल सर. और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो आपने रिलेशनशिप की बात बोली, तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मैंने यहाँ फील भी की है, सीखी भी है, कि एज अ PhD कैंडिडेट, या खाली PhD कैंडिडेट नहीं, कहीं भी कोई हो, किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में, तो हमें एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके रखना चाहिए सबके साथ. अपने सुपरवाइजर के साथ, अपनी थीसिस एडवाइजरी कमेटी के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, और अपने कोलीग्स के साथ, बाकी जो PhD कैंडिडेट्स हैं. तो ये पॉइंट जैसे आपने पहले भी बोला था कि भाई हमें एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, जिसमें गिव एंड टेक होना चाहिए. हम किसी से हेल्प भी ले रहे हैं, किसी की हेल्प कर भी रहे हैं, और एक पॉजिटिव मेंटालिटी रखना, और कई बार और समझना कोई दूसरा बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे. तो ये चीज़ें ओवरऑल हेल्पफुल होती हैं, ये ओवरऑल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में और आपकी PhD को फर्दर बढ़ाने में. वेल, हम सब यहाँ पे एक ही चीज करने आए, नॉलेज सीख करने. एंड देयर इज नो एंड टू नॉलेज. पूरा पतीला भरा हुआ है, जितना मर्जी आप नॉलेज खाइए और पीजिए, कभी खत्म होने वाली नहीं है. सो आई एग्री विद यू. कोलैबोरेटिवली सो मच नॉलेज कैन बी क्रिएटेड. बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके. फेयर इनफ. सो दैट्स अ PhD जर्नी ऑफ 5 इयर्स. थोड़ी चर्चा करते हैं व्हाट आफ्टर PhD. तो PhD जब खत्म हो जाती है या होने वाली होती है, तो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस सीक जॉब्स. तो कहाँ पर पोस्ट PhD जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हमारे स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पे मिली हैं, और क्या क्या एवेन्यूज ओपन होते हैं, थोड़ा बताइए साई. More specifically, sir, PhD के बाद most of the PhD students look for academic positions as assistant faculties or assistant professors. अभी तक हमारे यहाँ से हमारे सीनियर्स जो थे वो इंटरनेशनली एंड नेशनली प्लेस्ड है. जैसे IIM दुबई में प्रोफेसर्स हैं, या फिर बिट्स दुबई कैंपस में प्रोफेसर्स हैं. बेबी IIMs में जैसे कि IIM रांची में, IIM त्रिचपल्ली में, IIM जम्मू में, IIM अमृतसर में, हर जगह दे आर प्लेस्ड. सो हमारे बच्चे yes, our seniors have been thoroughly well placed both internationally and nationally, and as well as in private colleges like IIMI Delhi and IIMD Nalsar Nalsar too. Okay.
Okay. So almost what we are trying to say is almost anywhere, all IITs, all IIMs, all good B schools, Yes. international as well as National. domestic are a viable option to people for राइट PhDs. राइट For उसके अलावा SS. सर यहाँ से तो नहीं, जैसे कुछ जगह मैंने देखा है कि कुछ लोग, बहुत कम लोग इंडिया में आफ्टर पीएचडी कॉर्पोरेट करियर भी Choose ऑप्ट करते आउट कर लेते हैं, लेकिन बहुत उनकी परसेंटेज बहुत कम है. बट कुछ लोग मैंने देखे हैं, लिंक्डइन पे मैं कनेक्टेड हूँ, वो जैसे अमेजोन में या अर्नस्ट एंड यंग में, तो इस तरह की कंपनियों में वो एनालिटिक्स या नीलसन जैसी कंपनियों में, गार्डनर जैसी कंपनियों में एनालिटिक्स रिलेटेड रोल प्ले कर रहे हैं. So that's the beauty of this program. I agree, कम लोग जाते हैं, ज्यादा academic pursuits करते हैं, but including my batches long ago, हर बैच में कुछ स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट में जाते हैं. Yes. और वो ऑप्शन भी खुली रहती है Right. PhD के Yes. बाद, because फॉर पोजीशन जहां आपको रिगरस रिसर्च करना हो या एनालिसिस करना हो, वहां पे आई थिंक PhD ब्रेन कैन डू Right. वंडर्स. हाँ, ये सर अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि पीएचडी में खाली हम जब थीसिस लिखने का जो प्रोसेस जी. है या रिसर्च पेपर लिखने का प्रोसेस है, हम बहुत सारे स्किल सेट्स नए डेवलप कर रहे हैं. साइंटिफिक राइटिंग, जो एनालिसिस, लॉट्स ऑफ एनालिसिस स्किल्स, जो अलग अलग तरह के टूल्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसमें डेटा को अप्लाई करके उससे इंसाइट्स निकाल रहे हैं. राइट. उसका मीनिंग क्या है, जो उसमें से डाटा का जो रिजल्ट्स आए हैं उसका मीनिंग क्या है, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए भी और थियोरेटिकल एप्लीकेशन के लिए भी. राइट. तो ये जो चीजें हैं वो इंडस्ट्री में भी यूजफुल हैं. राइट, अग्री. और सही, एट सम पॉइंट आपने बोला था, मैं उसको आगे परस्यू नहीं कर पाया था, आपने कहा था कि एक पर्सनैलिटी चेंज भी मिलता है आपको पोस्ट अ पीएचडी प्रोग्राम. तो किस तरह की पर्सनैलिटी चेंज आप खुद में देख रहे हो? Sir, if somebody walks into PhD, they might have patience or they might not have patience, but I can surely give it in writing that once you're done with a PhD, that is a proof that you've been thoroughly patient throughout the journey. First. Second, there is a transformational change in your personality, I would say. You will learn that even if you fall, you know how to pick it up from there, because in journey the life happens to you. Throughout the PhD program, the life happens to you in such a way that you will learn to pick yourself up even if you fall. So there is, at the end of the PhD journey, everybody is a winner because they have changed themselves and transformationally, more specifically, in a holistic way, I would say. So if you consider a failure as a stepping stone, then PhD will give you as many stepping stones and make you and refine you as a person, so that the future life challenges would be really a cakewalk for you if you survive the PhD program thoroughly. Cannot agree more with you, and all of us, including me and many other professors, have seen that transformation. So this is my 5 years of journey. Yeah. What is your perspective of becoming a professor, and how do you define that change in your personality? Did you see any? Well, yes, Percy. definitely, without a doubt. Thank you for asking me. Let me absolutely assure you with 100% confidence that you have done no mistakes by pursuing a PhD, although it's too late now. You're almost at the end of that. But definitely, I have never come across a professor who has ever repented doing a PhD. This program gives you so much to think, to feel, to behave, and the life of a professor is simply amazing. You get so much freedom to do the things that you like to do the research on topics which you enjoy doing, to find the questions which you really want to solve. And therefore, in that sense, I think that there can't be any other profession which is more intellectually stimulating and fulfilling and cherishing than an academic pursuit. So congratulations for having finished this PhD program. And on that note, friends, I conclude this video. I hope you learned a lot from our students through this video. You now know whether doing a PhD program is the right career option for you. Take a calculated call. No one tells you that it's an easy program. No one tells you that it's gonna be super smooth. It's really going to be long, difficult, at times challenging. But in the end, the fruits of all this effort and pain is going to be amazingly sweet, and the life of a professor is great. So go for it.
So I think, friends, we should now move on to the actual curriculum of PhD. I want to know, I'm sure the audience would want to know कि ये 5 साल जो हमने बोला है 5 साल ये अंदर से कैसे दिखते हैं. Give us a view of these 5 years, how it is broken और इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कराया जाता है. So in all the 5 years, so usually the journey of PhD lasts somewhere between 4 to 5, more specifically from 4.5 years to 5 years, where you receive your stipend and allowance. इस बीच में the first 2 years is a mixed blend of both MBA courses and PhD courses. So the first 2 years you're totally invested into reading the literature and from various disciplines, not just particularly to a specialized your domain of research. You read, if I'm from OBHR, I might read literature from economics, strategy, marketing. So the first 2 years is an overall global perspective of what management is about, and then at the end of the second year, you give a comprehensive examination, and at the end of the first year, you give a CIS, course independent study. Comprehensive examination 2 साल में वो एग्जामिनेशन टेस्ट करता है कि तुम लोगों ने क्या पढ़ा, एंड दैट इज लाइक अ जर्नी विच टेस्ट योर व्हाट हैव यू लर्नड एज एन जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या क्या सब्जेक्ट 2 साल में जो सारा पढ़ा उसको कॉम्प्रिहेंसिव में टेस्ट किया जाएगा. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर कॉम्प्री क्लियर नहीं हुई तो बाय बाय, गो बैक होम. योर ड्रीम ऑफ PhD ends right there. And if you pass, then you move to the next stage, which is the journey into your own personal research or a walk into your personal research alone. But also there's a condition that you should have a minimum of 7 CGPA in the 2 years of coursework when we were doing it. हाँ, fair enough, Sai, but I think अपने ऑडियंस को उतना भी नहीं डराते हैं. I think it is a manageable CGPA and I think अगर लोग पास हो ही जाते हैं. What you say, Harman? Definitely, sir. अगर कोई कैंडिडेट सिंसेरिटी है, इंटीग्रिटी है, हार्ड वर्किंग है, मेरे ख्याल में ये 3 क्वालिटीज काफी हैं. सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क. डेफिनेटली सर. क्योंकि अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज हैं और आप डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति, तो आप ये एग्जाम इजीली क्लियर कर लेंगे. कर ही लेंगे इजीली या विद डिफिकल्टी. आई वोंट से दैट ऑफ कोर्स इट इज अ रिग्रेस एग्जाम, क्योंकि 2 साल का आपका कोर्स वर्क है. लेकिन अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं उसके प्रति, तो द कैंडिडेट विल क्लियर इट. हो जाएगा. यस, देयर इज नथिंग टू बी गेट स्केयर्ड. सो आई वांट टू अश्योर द PhD candidates. So friends, Harman is assuring you that with sincerity and hard work and integrity, you can move to the next stage.